Dear children, today in this session we are going to revise wave optics, which is in class 12th, either in Maharashtra board or in CBSE. दोनों में ही ये क्लास 12th में गिवन है आपको चैप्टर. महाराष्ट्र बोर्ड में चैप्टर नंबर 7 एंड CBSE और NCERT बुक में पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2. सबसे पहले देखते हैं हम व्हाट आर द डिफरेंट थियरीज गिवन फॉर लाइट. सो मेन टू थियरीज आर न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी एंड हाइजेंस थ्योरी. फर्स्ट, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी में बोला गया है कि लाइट कंसिस्ट्स ऑफ tiny elastic particles. So because they were considered particles according to Newton, so न्यूटन ने पार्टिकल्स को नाम दिया corpuscles. These corpuscles when enter our eyes and affect our retina, then they create a sensation of vision. Now different colors are due to different shapes and sizes. जैसे लाइट में विजिबल लाइट रेंज में हमको विद क्योर इस तरह से 7 मेन कलर्स मिलते हैं. So they are according to Newton due to different shapes and sizes. Now this theory could explain reflection and refraction. तो ये इसका बेनिफिट है कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन न्यूटन्स थ्योरी से एक्सप्लेन कर दिया गया. Now the drawbacks कि what were the disadvantages और क्या limitations थे. तो सबसे पहली बात है कि लाइट क्योंकि कॉर्पसल्स या पार्टिकल्स से बनती है, तो जब लाइट सोर्स में से कंटिन्यू एमिशन होगा तो इससे सोर्स का मास कम होना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं हुआ. सेकेंड बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि light travels faster in denser medium than in rarer medium according to Newton's theory. Then third, concept of interference, diffraction and polarization could not be explained. And the last was it could not explain simultaneous reflection and refraction. It means when light is falling on a sheet, transparent sheet, तो उसमें से एक ही टाइम पर दोनों फिनोमिना होंगे. कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी. सो इस फिनोमिना को न्यूटन्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई. Now, the second theory is Huygens wave theory. So, according to this, we are getting the name wave. ठीक, तो आपको इस वर्ड पर ही फोकस करना है. दैट लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स हाइजेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग. अब हाइजेन ने एक और बात सजेस्ट की कि जब भी लाइट प्रोपेगेट करेगी तो पूरे यूनिवर्स में हम एक मीडियम अज्यूम करेंगे which can be called as the luminiferous ether. So it should exist all over the universe. Now different colors of light are due to different wavelengths. Now this theory could explain partial reflection and partial refraction जिसको न्यूटन्स थ्योरी एक्सप्लेन करने में अनेबल थी. Newton's theory was also unable to explain diffraction, interference and polarization, but Huygens theory was able to explain diffraction and interference but not polarization, because Huygens theory के according light waves are longitudinal waves. So you may check starting from red color to violet color. We may check by the diagram that light waves have different wavelengths as we consider different colors. और प्रैक्टिकली भी रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है around 8000 angstrom, and that of violet color is half than that of red color around 4000 angstrom. So इसके कारण colors arise होंगे. Next point according to Huygens was
Light travels faster in rarer medium and not in denser medium. So this point was also practically correct. Next, you can see in this slab that light waves travel faster in air and slower in glass because glass is a denser medium. Now, the drawbacks of Huygens theory was rectilinear propagation, that is, light waves travels in a straight line that could not be explained. Luminiferous ether could not be found anywhere because, according to Huygens, it was all pervading and a hypothetical medium. कि हाइजन ने ये बोला था कि ईथर वैक्यूम में भी प्रेजेंट है but note that ether is not the substance or ether gas that we come across in chemistry. Therefore, there was no evidence to prove its existence, and hence it was difficult to accept the concept. Also, Huygens theory could not able to explain modern physics concepts like photoelectric effects. Next comes Maxwell's electromagnetic theory. So, according to Maxwell, he postulated the existence of electromagnetic waves, whereas light waves were assumed to be EM waves. So, EM waves में electric field and magnetic field, according to the shown gram, will be moving or vibrating perpendicular to the direction of propagation. तो आप देख सकते हैं पर्पल कलर से दिखाए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस एंड रेड कलर से पर्पल कलर से दिखाए हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस एंड फ्रॉम रेड कलर द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर शोन एंड इफ वी कंसीडर डिफरेंट एक्सेस सपोज हम मैग्नेटिक फील्ड के एक्सेस को लेते हैं x एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सेस को लेते हैं y, then the axis for the propagation of light waves is considered to be z. Now, this theory could explain rectilinear path of light, reflection, refraction, polarization, interference and diffraction. तो इस फिनोमेना ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया but again some are the limitations like this theory could not explain photoelectric effect जो कि काफी बाद में एक्सप्लेन किया गया. And next comes Einstein's quantum theory. According to Einstein, light propagates in the form of packets of light energy, which are also called as quanta. Each quanta of light called photon has energy E equal to h nu, where h is Planck's constant and nu is the frequency of light. And Einstein also got Nobel Prize based on Einstein's quantum theory in 1921. Next, this theory could explain also the concept of modern physics like photoelectric effect, discrete energy concept, etc. But this theory was unable to explain the concepts like diffraction, interference and polarization. तो ये ध्यान रखेंगे कि सभी थियोरीज के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स थे तो कुछ ना कुछ साथ में ड्रॉबैक्स भी थे. अब आता है आपके पास एक मेन कंसेप्ट जो कि आपको इस पेयर फॉर्म में मिलता है. जब भी आप बात करेंगे वेव फ्रंट की तो साथ में ही अटैच्ड होगा वेव नॉर्मल which is always a perpendicular drawn to the wave front. So, what is the wave front? Define a locus of all the points in a medium where the light waves reach simultaneously from a single source such that they vibrate in the same phase
with same frequency and amplitude. ठीक, तो ये हो जाएगा वेव फ्रंट का डेफिनेशन. सो फॉर एग्जाम्पल वेव फ्रंट जब भी आप डिस्कस करेंगे तो ऐसे पॉइंट्स, सभी ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर लाइट एक ही समय पर पहुंच रही है, मीन साइमल्टेनियसली, एंड दूसरा पॉइंट होगा वो सारे के सारे पॉइंट्स सेम फेज में होंगे, मीन्स देयर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन विल बी सेम. So if we consider the types of wavefront, we have got three types. First is the spherical wavefront, second is cylindrical wavefront, and third is plane wavefront. तो cylindrical wavefront में जब आप source consider करते हैं, so you have to take the point source. जैसे इस फिगर में आपके पास O एक point source है एंड जिससे सभी डायरेक्शंस में वेव नॉर्मल्स निकल रहे हैं. So these arrows indicate the direction of propagation of light waves, also called as wave normals. Whereas आपको ये जो सर्कुलर शेप्स दिख रहे हैं ये वेव फ्रंट्स होंगे. तो वेव नॉर्मल्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट्स. So O will be the point source. Now if we consider figure number second, तो प्लेन वेवफ्रंट के केस में आपके पास में सोर्स, the source should be either a point source or a linear source or a cylindrical source. एंड आप इससे सबसे पहले वेवफ्रंट का बहुत स्मॉल सेक्शन कंसीडर करेंगे एंड दैट टू एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. तो हम देख सकते हैं कि वेवफ्रंट कहाँ से आ रहा है, दैट इज नॉट नोन. चेक दिस. पैरेलल वेव, पैरेलल वेव नॉर्मल्स आ रहे हैं आपके पास एंड दीज आर द वेव फ्रंट्स. ये आपके पास वेव फ्रंट्स हैं और ये कहाँ से आ रहा है वो नोन नहीं है. द सोर्स इज नॉट नोन. इट मीन्स दे आर कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड वी आर कंसीडरिंग जस्ट अ स्मॉल सेक्शन ऑफ वेव फ्रंट. तो ये जब सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो आप टाइप ऑफ वेव फ्रंट को बोलेंगे प्लेन वेव फ्रंट. Now check again. These purple colors are the wave normals, whereas these green colors are the wave fronts. Now, for the third type, cylindrical wavefront, the type of source should be linear or cylindrical. So again these are the wave fronts. और अगर आप इन पर perpendicular की बात करते हैं तो these are the wave normals. Now always remember that wave front आप जो भी ड्रॉ करेंगे वो सभी possible directions में ड्रॉ कर सकते हैं but they will exist only in the forward direction. So according to the direction of observer, we have to consider the wave front. Now next comes Huygens principle, according to which each point on a wavefront acts as a secondary source of light. वेवफ्रंट का टाइप ले लेंगे पहले आप. देयर आर थ्री टाइप्स, स्फेरिकल, प्लेन और सिलेंड्रिकल. और उस पर हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट के जैसा एक्ट करेगा, एमिटिंग सेकेंडरी लाइट वेव्स कॉल्ड वेवलेट्स. ये छोटे छोटे वेव्स को आप बोल देंगे वेवलेट्स, which propagate in all directions, which travel with the speed of light in the medium. The new wavefront can be obtained by taking the envelope of these secondary wavelengths traveling in the forward direction. Check this. सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के वेवलेंथ्स को ही आप एक्सप्रेस करेंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट सेकेंडरी वेवलेट्स which are in the backward direction are not considered and hence
Thus is the envelope of the secondary wavelets in forward direction. The traveling in the backward direction are ineffective or not considered. So this is the question, like explain the construction of spherical wavefront with accordance to the Huygens principle. तो सबसे पहले हम लेते हैं this is the wavefront which is at t equal to 0. अब हम लोगों ने इस wavefront पर different सेंटर्स इमेजिनरी सेंटर्स एज्यूम किए और इन पर हमने कंस्ट्रक्शन किया स्पीयर्स का इमेजिनरी स्पीयर्स का which travel with the speed of v in this medium. तो आप imaginary radius को मान लेंगे v into t to find the new wavefront after time t. तो new wavefront हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए ये सारे न्यू वेव फ्रंट्स ड्रॉ किए एंड एज यू कैन सी जस्ट वी हैव ड्रॉन द हेमीस्फीयर्स और सेमीस्फीयर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इन पर जब हम कॉमन टेंजेंट बनाएंगे दिस इज द कॉमन टेंजेंट then this will be showing us the new wavefront after time t. So this is according to the Huygens principle that each point on the wavefront AB represents a new source of light. ठीक तो इस तरह से आपको शेप कौन सा मिला है सिलेंड्रिकल शेप मिला आपको सिलेंड्रिकल तो ये आपने बट सोर्स लिया था पॉइंट सोर्स एंड इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लिया था तो दिस फिगर कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस plane wavefront or also cylindrical wavefront after time t. अब अगर spherical wavefront का more descriptive figure बनाना है so this can be the more descriptive figure where we are taking the source of light as the point source जिसमें से स्पीयर्स निकलते हैं तो फिर से आपने हेमीस्फीयर्स लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में now each point on this hemisphere like this acts as a new source of light और इस पर बना लिए हम लोगों ने hemispheres अब after time t to find the position of new wavefront we draw imaginary spheres taking the radius of each sphere as vt और जब इन सारे spheres पर आप common tangents बनाएंगे check this at these points जब common tangent बनाएंगे आप तो ये common envelope आपको देगा position of new wavefront after time t. Now, using Huygens principle, reflection of light at a plane surface is to be proved. So, this is the diagram which represents reflection of light at a plane surface and according to Huygens principle, we will prove all laws of reflection. तो सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग what are the laws of reflection. So, according to first law of reflection, it was given that आपने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं laws of reflection. तो सबसे पहले जो लॉ में बोला गया था कि the angle of incident should be equal to the angle of reflection. अब second law में बोला गया था the incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane at the same point and the third was not the main law that incident ray and reflected ray lie on the opposite sides of normal. तो सबसे पहले आपके पास जो बेसिक लाइन होगी वो एक नॉर्मल होगी. So let me consider AP as the normal. Similarly, आप C point पर भी एक normal draw कर सकते हैं. अब MN ले रहे हैं हम लोग एक reflecting surface. This is considered to be as the reflecting surface
और एक वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट ले रहे हैं हम लोग, विच इज इंडिकेटेड बाय ए बी। ठीक, ए बी आपके पास इंसिडेंट वेव फ्रंट है, चेक दिस। तो ए बी पर सबसे पहले हम लोग वेव नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जहां भी वेव फ्रंट होगा वहां वेव नॉर्मल जरूर exert करेगा. So this figure is showing RA. RA is the ray of light which is also called as wave normal, as well as QB is also a wave normal or the ray of light. So RA and QB show the direction of incidence. अब हम मानते हैं कि इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी जैसे ही पॉइंट ए से सरफेस एम एन को टी इक्वल टू 0 पर टच करता है, उसी समय पॉइंट बी, चेक दिस, पॉइंट बी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को सी पर टच करता है। बट अगर आप यहाँ चेक करेंगे पाथ डिफरेंस, ऑब्वियसली वी विल बी गेटिंग द फेस डिफरेंस। तो बी पॉइंट को सी पॉइंट पर आने के लिए टाइम कंज्यूम करना पड़ता है कैपिटल टी। Hence we can check that ये जो एक ही वेव फ्रंट है ए बी, ये डिफरेंट टाइम्स पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच करता है, एंड हेंस अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल let's assume that each point on the wavefront like A and B act as the secondary source of light, and they will start propagation of hemisphere in succession. So for reflection, the hemispheres to be considered are on the same side of the reflecting surface. तो आपने A पॉइंट को सेंटर एज्यूम करते हुए इसमें से एक हेमिस्फीयर निकाला जिसका रेडियस हम मान लेंगे VT. Radius is assumed as AE equal to VT. Similarly, बी पॉइंट को भी आप मान सकते हैं हेमिस्फीयर का एक पॉइंट, या फिर सी पॉइंट को मान सकते हैं एक, इस तरह से आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि बी पॉइंट को अगर सेंटर माना तो इट विल स्टार्ट प्रोपिगेटिंग द reflected wavefront when it is reflected after going through point C. Hence, the radii of wavelets emitted by points between A and C will gradually decrease from Vt to 0. अब जैसे ही आप इस फिगर में मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कंसीडर करते हैं तो वी कैन चेक दैट AE equal to BC equal to VT. That is the distance traveled by the light in the same medium in the same time. क्योंकि ऊपर का मीडियम ले रहे हैं हम. Now arrow AE shows the direction of propagation of the reflected wave. ये चेक करेंगे. आर ई से आपने दिखाया इंसिडेंट रे, और ये जब ए पॉइंट से रिफ्लेक्ट होता है तो ए ई से आप दिखा देंगे रिफ्लेक्टेड रे. सो द नॉर्मल टू द पी एन, normal to the mn, ठीक है, normal to the mn is represented by pa. Pa is normal to the surface mn. Now the angle of incidence, that is angle RAP, is shown by angle I, whereas angle of reflection is PAE, is shown by R. So we can check that the triangles ABC, check करेंगे triangle ABC and AEC, दोनों के दोनों right triangles हैं. क्यों right triangles है, रीजन चेक करें. बिकॉज ये आपके पास में इंसिडेंट वेव फ्रंट है एंड दिस इज द वेव नॉर्मल, तो ये एंगल 90 होगा, और यहाँ पर AEC में ये आपके पास इतना डिस्टेंस रेडियस है एंड ई पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है. सो फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ दिस फिगर
we can prove that angle I equal to angle R. Hence, first law of reflection is proof, as well as other two laws can be proved by the geometry of the figure. Now check refraction of light at a plane boundary between two media. So सबसे पहले refraction का basic meaning है when light waves pass from one medium to another medium, the light waves suffer refraction. Refraction process में if the light waves are going from first medium to second medium, then according to Snell's law, we check sine of I upon sine of R is given by the refractive index of second medium by with respect to first medium. So this can also be written as the ratio of mu2 upon mu1. Now, the second law states that the incident ray, refracted ray and the normal lie on the same plane at the same point. मतलब A पर ही lie करेंगे तीनों. And third, not main law states that incident ray and refracted ray lie on the opposite sides of the normal. तो सबसे पहले हम फिर से यहाँ भी कंसीडर करते हैं कि ए बी आपके पास में इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है. ए बी is the incident plane wave front which is incident on a plane boundary MN. अब ऊपर और नीचे के मीडियम अलग अलग हैं. सो दे आर डिस्क्राइब्ड एज मीडियम 1 एंड मीडियम 2. So let's assume the refractive index of upper medium is mu1 and that of lower medium is mu2. अब जैसे ही आपने लिया t इक्वल टू 0, तो जो प्लेन वेव फ्रंट है वो ए पॉइंट पर आकर टकराती है विच इज द बाउंड्री ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. तभी बी यहाँ पर है उस समय, और टी टाइम के बाद बी आके टकराता है सी पॉइंट से. सो हम मानते हैं फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड है v1 एंड सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड है v2. नाउ वी चेक दैट बाय द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर that as we take the distance traveled by light, we get sin I. sin I जो रेशियो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा. तो अगर आप I के लिए कंसीडर करें तो परपेंडिकुलर है BC. So this is BC divided by hypotenuse is AC. Now BC as shown in the figure is the distance that is using Huygens principle V1T. So it is V1T divided by AC. Now when we take sine R in the triangle, AEC, then this is 90 minus R. ठीक, because ये आपके पास R है तो ये हो जाएगा sin 90 डिग्री minus R. So जैसे ही आप sin R कंसीडर करते हैं तो दिस इज इक्वल टू V2T और यहाँ पर ये एंगल R हो गया because this is 90 minus R. So sin R equals to this is AE divided by AC. So AE मान सकते हैं हम डिस्टेंस according to Huygens principle V2T divided by AC. Now when we divide sin I upon sin R, we get AC will cancel and we get V1 upon V2. So it shows that the speed of light, because R is decreased, so speed of light is less in the second medium, or we can also express that this is the ratio can be expressed as C upon V2 divided by C upon V1, which may be the refractive index of second medium upon refractive index of first medium. So after cross multiplication we get
n1 sin I equal to n2 sin R, which gives us the proof of Snell's law or the law of refraction. Hence, what we see from the figure that incident ray, refracted ray and the normal to the boundary surface are in the same plane. Now, if we consider V1 is greater than V2, that is N1 is less than N2, then I is greater than R. Hence, we say during oblique incidence, the refracted ray will bend towards the normal while going from optically rarer medium to the optically denser medium. Or other words में आप क्या बोलते हैं? When the light waves go from denser medium to the rarer medium, they go away from the normal. Hence, we can say that the refracted image will not be inverted as it can be seen from the diagram. So, for the normal incidence, the image seems to be very straight, but except for normal incidence, the image seems to be broken. जैसे आप एक पेंसिल को पानी में रखेंगे और आप साइड से देखेंगे तो वो पेंसिल आपको ब्रोकन कंडीशन में दिखाई देगी. ठीक, तो ये सब क्यों होंगे? Due to the points of or the concepts of refraction of light. Now the next concept is the polarization. तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि polarization क्या है. As we all know that light is an electromagnetic wave. तो जैसे कि इसके नाम से हमें पता चलता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा as well as the magnetic field is also there, and both the fields are perpendicular to each other and also to the direction of propagation. अब लाइट का ओरिजिन कहाँ से हुआ? Light is produced by the vibrations of atoms and hence by the propagation of electrons. So जैसे ही हम मान के चलते हैं कि एक एटम में suppose one atom has emitted the wave along x-axis. ठीक है, आपने बोला कि जो वेव है वो x-axis के along ट्रेवल कर रही है. इट मीन्स हो सकता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड y-axis के along एग्जिस्ट करता है एंड द मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक्सिस से परपेंडिकुलर, इट मीन्स z एक्सिस में एग्जिस्ट करेगा. एंड if another atom in the source also emits a wave which is traveling along x-axis, तो आपने assume किया second atom जो फिर से वेव को ट्रैवल करवाता है along x-axis, but it is not necessary कि इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स E2 एग्जैक्ट y एक्सिस में हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्ट z एक्सिस में हो. सो इट मीन्स क्या हुआ, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी भी वाई जेड प्लेन में हो सकता है एंड द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट. तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड होगा, then magnetic field will be perpendicular to the direction of electric field. Hence, what we can say that the electric fields of all the waves emitted along x-axis like sun, star या फिर light bulb will be in all possible directions in the YZ plane. एंड एक बार आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड कर लिया, देन वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ऐसी सभी वेव्स को आप बोलेंगे दे आर कॉल्ड एज unpolarized waves and they are shown by this type of star structure or by the double sided arrows. इस तरह से आप दिखाएंगे. तो सपोज हम डबल साइडेड एरोज से दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन पर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स को हम दिखाएंगे डॉट्स से. हेंस वी कैन से दैट
The light beam is traveling perpendicular to the plane of paper. Now, but suppose we can do a device such that हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रेस्ट्रिक्ट कर दें ओनली इन वन डायरेक्शन. जैसे हम यहाँ पर कन्फर्मिटी से नहीं कह पा रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग ही होगा, बट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रेस्ट्रिक्ट कर दें only along one particular direction, then that wave will be called as, or that light will be called as plane polarized light. So we can check this figure in which the direction of electric field vectors is restricted. So this is called as plane polarized light in the second figure, जिसमें हमने E वेक्टर का डायरेक्शन फिक्स कर दिया है. So E vector is restricted such that it can vibrate the atoms only in the horizontal direction. ठीक, तो ये either it is coming towards us or it is going away from us. So what this wave is doing, it is passing the electric field along a particular direction to pass through and to block all other waves which have electric field in the other direction. The electric field in the other direction are blocks. ठीक है, ब्लॉक हो चुके हैं वो दूसरे डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अदर सभी डायरेक्शंस को ब्लॉक करते हैं. Those substances are called as polarizers. And next polarizer में ही हम डेवलप करते हैं the sheet which is also called as Polaroid. So this is a kind of synthetic plastic sheet which is used as a polarizer. So, according to the Polaroid, हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम करेंगे कि इमर्जेंट वेव इज ओरिएंटेड अलोंग द polarizing axis. So check this figure. This is the figure in which we have arranged an experiment. इस बल्ब में से निकल रही है पहले अनपोलराइज्ड लाइट और वो इस शीट में से पास हो जाती है अनपोलराइज्ड लाइट. बट चेक द पोलराइजिंग एक्सिस. इट इज गिवन लाइक दिस. इस डायरेक्शन में पोलराइजिंग एक्सिस दिखाया हुआ है आपको, ये है पोलराइजिंग एक्सिस. तो अगर हम इस अनपोलराइज्ड लाइट को, बिकॉज बल्ब में से अनपोलराइज्ड लाइट ही निकलेगी, सो जैसे ही हम इसको इस पोलरॉइड में से, जो कि आपको सर्कुलर शेप में पर्पल कलर से दिखाया हुआ है, जैसे ही पास करते हैं तो जो इमर्जेंट लाइट मिलती है वो प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी. सो द प्लेन ए बी सी डी, आपको अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिलेगा वो पोलराइजिंग एक्सिस के पैरेलल मिलेगा. सो दिस इज मेन पॉइंट. Electric field vector is parallel to the polarizing axis, means vertical form में मिल रहा है. So the plane ABCD which contains the electric field vector is called the plane of vibration. This is called as plane of vibration. Whereas the another plane, suppose हम इस another plane को consider करें E, F, G, H. So this will be called as plane of polarization. So we can say that plane of vibration has the electric field components, whereas plane of polarization is a plane which is perpendicular to the plane of vibration. So this be the definition. The plane ABCD containing the electric field vector of plane polarized light is called the plane of vibration, whereas the plane perpendicular to the plane of vibration
is called as the plane of polarization. So, hence, we can have the second figure in which we are passing unpolarized light through two polarizers. तो आपको दो सर्कुलर फॉर्म में दिखाए हुए हैं दो पोलराइजर्स. सबसे पहले हम लोगों ने इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट को कंसीडर किया. Now when it passes through first polaroid, we get electric field parallel to the axis of polarization of first polarizer. अब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सारे ये पैरेलल वेक्टर्स एज्यूम करते हैं. सभी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हमको फर्स्ट पोलरॉइड के एक्सिस के पैरेलल मिल चुके हैं. अब सेकेंड पोलरॉइड को हम स्लाइटली रोटेट करते जाएंगे. चेक दिस. इफ एक्सिस कम्स इन दिस वे, तो अब आपको फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स मिले हैं उनके कंपोनेंट सेकेंड पोलराइड के बाद मिल जाएंगे. सो व्हाट डू वी गेन कि सपोज वी गेट the intensity of the first wave after passing through first polaroid is E0. तो आपको जो सेकेंड पोलरॉइड के बाद में इंटेंसिटी मिलेगी दैट विल बी E0 into cos theta. ठीक. Now what we can say that the total intensity which is passing after first polaroid or second polaroid. अब जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ चुके हैं द मैग्नीट्यूड और द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज. ठीक है. आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इक्वेशन वेव इक्वेशन के फॉर्म में देते हैं. सो द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इज इक्वल टू E0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जो कि कंपेरेबल होगा y इक्वल टू y0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. अब एज्यूम करते हैं आपके पास बिफोर द फर्स्ट पोलरॉइड एम्पलीट्यूड था E1. So after passing through first polaroid, let the amplitude becomes E1 0. And over here we are taking E1 0 cos theta. So what do we consider that intensity of a wave is directly proportional to its amplitude square. ये फिनोमेना हम लोग काफी बार पढ़ चुके हैं. तो जो इंटेंसिटी सेकेंड पोलरॉइड के बाद मिलेगी आपको that will be equal to I1 into cos square theta, because what we are taking here E2 0 square is equal to E1 0 square into cos square theta. So this E2 0 is the amplitude after the second polaroid and E1 0 is the amplitude after the first polaroid. अब आपको जो भी फर्स्ट पोलरॉइड के बाद इंटेंसिटी मिलेगी तो इंटेंसिटी आफ्टर first polaroid that will be equal to 50% of the original intensity. इस बात का ध्यान रखना है. So when we get I2 equal to I1 into cos square theta, this is known as Malus law. Okay, so Malus, who discovered the law experimentally, and Malus law gives the intensity of a linearly polarized wave after it passes through a polarizer. So suppose हम यहाँ एक example ले लें. This is first polaroid and this is second polaroid. और आप मेन पॉइंट पर लेते हैं सपोज इंटेंसिटी 4 वाट पर मीटर स्क्वायर. तो फर्स्ट पोलरॉइड के बाद आपको इंटेंसिटी मिल जाएगी 2 वाट पर मीटर स्क्वायर. अब इस प्लेस पर आपको क्या इंटेंसिटी मिलेगी वो डिपेंड करेगा सेकेंड पोलरॉइड के रोटेशन पर. सो सपोज दिस इज थीटा. सो वी कैन हैव the resultant intensity after second polaroid as 2 into cos square theta. Now if theta is 90 degree,
तो उस कंडीशन में I2 का आंसर आ जाएगा 0 एंड पोलरॉइड्स को आप बोलेंगे कि दे आर इन द क्रॉस्ड पोजीशन. So crossed position is the position when two Polaroids are at 90 degree, but suppose the second Polaroid was just rotated through 30 degree. तो आप I2 का आंसर लेंगे 2 into cos square 30 degree, and since cos 30 degree is root 3 by 2, तो suppose हम पूरा आंसर निकालें root 3 by 2 का square. So this will be 2 into 3 by 4. So this will be 3 by 2. तो इस तरह से आप डिफरेंट एंगल्स के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी आफ्टर सेकेंड पोलरॉइड निकाल सकते हैं बाय मेलिस लॉ. Now, this is very important discovery in the polarization by reflection. क्योंकि polarization आप कुछ खास मेथड से कर सकते हैं लाइक बाय स्कैटरिंग ऑल्सो. तो इस फिगर में ब्रूस्टर्स लॉ में सबसे पहले हम एक रिफ्लेक्टर और रिफ्रैक्टर पर अनपोलराइज्ड इंसिडेंट रे को फॉल करेंगे जिसमें आपको डबल एरोस एंड डॉट्स दोनों ही दिखाई दे रहे हैं. मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही इंक्लूडेड है. अब एक खास एंगल जिस पर वेव इंसिडेंट होगी सच दैट द पोलराइज्ड रे विल बी कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड और टोटल पोलराइजेशन हो जाएगा इसमें. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंप्लीट पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. और जो अदर पार्ट ऑफ एनर्जी है that will be partially polarized refracted ray. So, by the law of reflection, we also get this angle. This is theta b. इसको हम बोल रहे हैं Brewster's angle. So, this theta b plus 90 degree plus theta r. We are getting them as the linear angle. So 180 degree मिल गया आपको इनका आंसर. So we get theta b plus theta r equal to 90 degree. अब जैसे ही हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं we get that n1 upon n2 equal to sine theta r divided by sine theta b. Now we may put the value of sine theta r. So check what is sine theta r equals to. This is 90 degree minus theta b. So when we do it completely, we get theta b equals to tan inverse n2 upon n1, which is Brewster's law, or we also get n2 upon n1 equal to tan theta b. So ये जो आपके पास phenomena that is polarization by reflection, it is used to cut glare from the reflecting surfaces using special sunglasses which reduce the intensity of the partially or fully polarized reflected light coming to the eyes from reflecting surfaces. Hence, we can see that the intensity of sunlight or light which is coming from artificial sources which was completely unpolarized, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सभी डायरेक्शन में पॉसिबल थे, तो उसको आपने कट कर लिया टू द हाफ इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ अ पोलरॉइड. Hence, this phenomena of polarization by reflection works only for the non-metallic sources. So remember all important points. पोलराइजेशन का नेक्स्ट मेथड है बाय स्कैटरिंग. तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज स्कैटरिंग. तो इसके लिए आप कंसीडर करेंगे सनलाइट. अब सनलाइट जब सन से अर्थ तक आएगी तो इट स्ट्राइक्स ऑल द मॉलिक्यूल्स और ऑल द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट्स पाथ, जिसमें कि डस्ट पार्टिकल्स भी आएंगे. अब स्कैटरिंग के लिए जैसे ही सनलाइट मॉलिक्यूल्स या डस्ट पार्टिकल पर टकराएगी इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन एंड हेंस इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज इरेग्युलर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन.
So this is called as scattering. Different direction में sunlight पूरी spread हो चुकी होगी. That is why due to scattering we observe the blue sky. क्योंकि जब भी scattering होगी तो उसमें blue light की scattering सबसे ज़्यादा होगी. And if there were no scattering, sky would appear dark to us. अब जैसे ही आप बात करते हैं सनलाइट को पोलराइज करने की या स्कैटर करने की, सो इट वाज पोलराइज्ड इन अ वे similar to that done by the Polaroid. So now the degree of polarization will depend on the angle of scattering. जिस तरह से हमने अभी ये मैलिस लॉ में चेक किया कि एंगल पर डिपेंड करेगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी. So suppose the angle is 90 degree, then the scattered light will be plane polarized. Okay, scattered light will be plane polarized. Hence, scattered light reaching us from different direction in the sky is polarized to different degrees. Next topic है आपके पास interference. So basically interference के लिए two light waves should reach a point simultaneously and they should obey the principle of superposition of waves. That is, the resultant displacement at any point is equal to the vector sum of individual displacements. So interference में basically phase difference main है. तो आप interference में type बोलेंगे. There are two types of interference. One is the constructive interference when the crest of one wave, check this, crest of one wave coincides with crest of another wave and the trough of one wave coincides with the trough of another wave. So they are shown by blue dots in the figure, means constructive interference, whereas if the waves meet in opposite phase or out of phase, that is called as destructive interference. तो इन प्लेसेस पर क्रेस्ट ओवरलैप करेगा ट्रफ को. तो ऐसे पॉइंट्स पर हमने बताया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एंड दीज पॉइंट्स आर शोन बाय द रेड डॉट्स. तो यहाँ पर इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी अगर एम्पलीट्यूड सेम है. चेक दिस. Blue dots are showing the constructive interference and red dots are showing destructive interference. तो आपको अल्टरनेटिवली कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव पॉइंट्स मिल रहे हैं. मीन्स अल्टरनेटिवली आपको ब्राइट एंड डार्क पॉइंट्स मिल रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज द इंटरफियरेंस. सेम एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं व्हेन वी put or gently throw a stone in the stationary water. तो हमको ये water waves मिल जाते हैं. Next check what are the coherent source of light. क्योंकि interference steady तभी मिलेगा आपको when the sources of light are coherent. What are coherent sources? If two sources which are having same frequency of waves or having a constant phase difference independent of time, means time wise उनका phase difference change नहीं हो रहा, phase difference zero भी हो सकता है. So those are called as coherent sources. Hence we must use for the interference of light the coherent sources. But अगर आप suppose two lamps use करते हैं of the same watch and same company, so those are considered as non-coherent sources because different sources emit waves of different frequency. Hence we have to use for interference
two coherent sources always. ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम टू कोहेरेंट सोर्सेज डेवलप करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में. So in this experiment, as we can see the experimental diagram, AB is the opaque screen and S is the point source. Point source में से spherical wavefronts निकलेंगे, and when these spherical wavefronts are incident on a lens, this is a lens, then when they come out of the lens they will be parallel, and hence over here the wavefront becomes a plane wavefront and over here the wavefront was the spherical. तो जैसे ही आपने प्लेन वेवफ्रंट को ए बी दैट इज ओपेक स्लिट पर फॉल किया तो इसमें दो होल्स थे S1 एंड S2. देन दोनों होल्स ने एक कोहेरेंट सोर्सेस जैसा वर्क किया, दे बिकम पेयर ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस. अब आपको इस स्क्रीन पर, लाइक सपोज वी आर टेकिंग द स्क्रीन एज PQ, स्क्रीन पर वाटर वेव्स जैसा डायग्राम मिल गया जिसमें रेड डॉट्स बताते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस एंड ब्लू डॉट शो यू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. And for the better results, these screens slits S1 and S2 should be about 2 to 4 mm apart. ठीक, जितना कम लेंगे आप डिस्टेंस कंट्रास्ट उतना ही ज्यादा अच्छा मिलेगा. So when the rays fall on S1 and S2, these two slits act as the coherent sources, and when these waves superpose with each other, then they can give us constructive or destructive interference. So ये जो आपको PQ स्क्रीन पर मिनिमम मैक्सिमम इस तरह का जो स्ट्रक्चर मिला है, that structure is called as fringes, and this whole pattern is called as interference pattern. ठीक, अब जैसे ही हम इसके पोजीशंस और इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं मैथमेटिकली, so we have to consider this diagram in which we are taking the distance between two slits as small d, the distance of screen from the slits as capital D, and let me assume a general point P. So from the center of the pattern to the general point, the distance is taken as small y. अब इस P पॉइंट पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, या तो आपको एक डार्क पॉइंट मिले या फिर आपको एक ब्राइट पॉइंट मिले. सो डार्क और ब्राइट दोनों के लिए फेज डिफरेंसेस शुड बी डिफरेंट. सो वी चेक फॉर डार्क पॉइंट्स. For dark points, we should have phase difference between two waves should be n minus half into 2 pi, where we may take n equals to plus minus 1, plus minus 2, or so on. And for bright points, we may have the phase difference as n multiple of 2 pi. Again we are taking n from 0. पहले प्लस माइनस 1 से लिया था, अब हम n को ले रहे हैं 0 से स्टार्ट करके. So we can get the width of any fringe means dark or bright, both are considered. किसी भी fringe की जब आप width लेंगे तो that is equal to lambda into capital D upon small d. So we can say that dark and bright fringes are equidistant and have equal widths, like lambda into capital D upon small d. Now when we discuss for the
इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी मिल रही है आपको। तो जैसे ही आप जनरल पॉइंट डिस्कस करते हैं P, so the intensity, resultant intensity at point P is directly proportional to 2 into E0 cos phi by 2 whole square, and therefore it comes as 4I0 cos square phi by 2। तो जब आपको न्यूमेरिकल में फेज डिफरेंस गिवन हो तो आप फाई की डायरेक्ट वैल्यू पुट करके रिजल्टेंट इंटेंसिटी का आंसर निकाल सकते हैं। सो वी कैन से दैट द इंटेंसिटी at the centers of the dark fringes is not exactly zero, but it is center of dark fringes, it is directly proportional to E10 minus E20 and bracket square. Where we are checking the E10 and E20 are the amplitudes of the waves coming from two different slits. So for finding intensity, we have taken the square of the amplitudes. Now, there are certain conditions which can give us the well-defined and steady interference pattern. Steady interference pattern means which do not change with respect to the time. So as we consider the first condition by the two sources of light should be coherent, means उनके बीच का जो phase difference है वो either zero होना चाहिए or constant with respect to time. The second condition is the two sources of light must be monochromatic, means उनकी wavelength same होनी चाहिए. So मोनोक्रोमैटिक मीन्स अगर वेवलेंथ सेम होगी तो ऑब्वियसली वो कोहेरेंट बन जाएंगे. Then the third condition should be the two interfering waves must have same amplitude, so their intensity will be same, and then the source will be called as equally bright. Then fourth condition for steady interference pattern is कि जो हमने ये दो slits लिए थे और यंग के एक्सपेरिमेंट में पहले ये दो पिन होल्स लिए थे, इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल d must be small in comparison to the distance between the slits and the screen. So d must be very small in comparison to capital D. What is the reason for that? So that the fringes are well separated and clearly seen. Now next point is the two slits must be narrow, because assume करें आप इसका रिवर्स कि दो स्लिट्स ब्रॉड है इस तरह से S1 एंड S2, तो अगर ये ब्रॉड होंगी तो ये अपने आप में मल्टीपल सोर्स जैसी फीलिंग देंगी and hence the interference pattern can be blur. Now sixth point is the two waves must be in the same state of polarization. It means same state of polarization मतलब the direction of electric field vector. Now we are observing the methods for obtaining coherent sources, जो कि steady interference pattern की सबसे पहली condition है. तो पहले चेक करें what are coherent sources. So the sources in which the phase difference is zero or constant with respect to time are called as coherent sources. तो इसमें सबसे पहला मेथड है Lloyd's mirror. So this is an extensively used device. So we can have the figure. Check this figure. This is the structure or device called as Lloyd's mirror. The light from a source is made to fall at a grazing angle on a plane mirror. This is a plane mirror, or some of the light falls directly on the screen as shown by blue lines,
and some light falls after reflection. ये आप चेक कर सकते हैं कि ब्लू लाइंस आती हैं और वो इस लॉयर्स मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं एंड दे द रिफ्लेक्टेड लाइट इज शोन बाय द रेड कलर एंड ये दोनों जब आपस में सुपरपोज करेंगे so we will have two different sources and those sources are found to be coherent sources. So this is very good method to obtain coherent sources. The next method name is Fresnel's by prism. तो सबसे पहले आपको ये जो structure shown है this is called as by prism in which we take the vertex angle means ये जो angle है वो हम नियरली लेते हैं 179 डिग्री or 180 degree. Hence, if the vertex angle is 179, other two angles will be half degree and अगर approximately 180 हुआ तो ये जो other two angles हैं they will be very small. तो हम बाय प्रिज्म को एक शीट या स्लैब को ग्राइंड करके भी बना सकते हैं. So when we meet the virtual rays we get two coherent sources and this region is called as the interference or the overlapping region. So by these two methods, Lloyd's mirror and Fresnel's biprism, we can have two coherent sources which are extensively used for interference experiment. Now, the next topic is diffraction of light. तो diffraction को सबसे पहले तो आप define करते हैं. So when we have diffraction of light, this is the bending of light waves around the corners of an obstacle provided the size of obstacle is comparable to the dimensions of light waves. So corners पर जब light bend होगी और आपको कुछ सुपरपोजिशन या ओवरलैपिंग जैसा फिनोमिना मिलेगा between different bent parts of the wave, then that phenomena is called as diffraction of light. So सबसे पहली बात है diffraction एक wave phenomena है जो कि साउंड वेव्स को भी एप्लीकेबल है. ठीक, बट बिकॉज साउंड वेव्स की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है हेंस डिफ्रैक्शन उसमें इजी है रिकॉग्नाइज करना बट ड्यू टू वेरी स्मॉल वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव्स diffraction phenomena becomes difficult to observe in light waves. Therefore, you can answer this question very easily कि साउंड वेव्स में आप डिफ्रैक्शन इजीली ऑब्जर्व या फिर लिसन कैसे कर सकते हैं एज कंपेयर टू द लाइट वेव्स. अब डिफ्रैक्शन के आपके पास दो बेसिक टाइप्स हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड एज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एंड अदर इज द Fresnel's diffraction. So check. Fraunhofer diffraction में आपके पास primary source of light. Like check this point. If the distance between the primary source of light, the slit causing diffraction, and the screen for viewing the diffraction pattern is very large, this is called as Fraunhofer diffraction. So because the distance is large, so you consider plane wavefront. This is the experimental setup for Fraunhofer's diffraction. तो because plane wavefront था तो उनको फोकस करने के लिए आपने यूज किया हुआ है एक कॉन्वेक्स लेंस. But in Fresnel's diffraction, the distances are much smaller and the incident wavefront is either cylindrical or spherical. And in this case, lens is not required to observe the diffraction pattern on the screen. Now, this is the figure for Fraunhofer's diffraction at a single slit.
So we are taking AB as the slit and AB के through plane wavefront pass हो रही है because we had used the convex lens और P and P0 are two different points. तो P0 को आप बोलते हैं central maximum point. So this is the brightest point in the interference और डिफ्रैक्शन पैटर्न बट इसमें कुछ डिफरेंसेस होंगे इंटरफियरेंस के कंपैरिजन में जैसे सेंट्रल मैक्सिमम पॉइंट की इंटेंसिटी बाकी सभी पॉइंट्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होगी एंड ऑल्सो the width of this central maximum point will be double to the width of other bright points. These are the two differences. अब जैसे ही आप locate करते हैं minima and maxima को, so this is the condition. At the location of nth minima, the path difference between extreme rays a sin theta is plus minus n lambda. आप प्लस कंसीडर करेंगे फॉर अपर पॉइंट्स एंड माइनस विल बी कंसीडर्ड फॉर लोअर पॉइंट्स एज कंपेयर टू सेंट्रल मैक्सिमम और प्रिंसिपल मैक्सिमम. सो दिस इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम. Now these are the equations giving us distances of minima and maxima from the central maximum, that is central bright point. So we can have the width lambda d upon a is similar to the fringe width in the interference pattern, but for the central bright fringe, or which is also called as zeroth bright fringe, the width will be double as compared to other bright fringes. Now the intensity of the central maximum is maximum. So this is the intensity distribution curve. So for solving numericals, just consider this intensity distribution curve. Points check करेंगे. This is the point principal maximum. This is first minima or also called as first secondary minima, second secondary minima, third secondary minima, and these are the points first secondary maxima, second secondary maxima, third secondary maxima, fourth secondary maxima. And you may also take the same points in the left side of the intensity distribution curve. Now the next point comes on the basis of diffraction, Rayleigh's criteria, which is necessary to resolve diffraction pattern of two objects. So this statement is the images of two-point objects close to each other are regarded as just separated, just resolved बोलेंगे आप उसको, if the central maximum of one diffraction pattern falls on the first minimum of the other diffraction pattern. So these are different diagrams. In the second diagram, we can have second diagram में ये आपके पास है central maximum of first object and this is the first secondary minima of second object. अगर ये exactly एक दूसरे के ऊपर vertical fall होते हैं, so the objects are said to be just resolved, and in other conditions they are unresolved or well resolved. So this is the Rayleigh's criteria. Next, case 1 gives us the condition for just resolved. Case 2, the condition of well resolved. So you may note down the points.
If S is greater than D, S means separation and D means the distance between the central maxima of two objects. अगर S D से बड़ा होगा तो आप objects को बोलेंगे well resolved. But if S is, that is the separation between two central maxima is less than the distance between the central maxima and first minima, then the objects are unresolved. तो वो दोनों objects आपको single object जैसे दिखाई देंगे. So unresolved है. Now, this is the difference between interference and diffraction. So you may see the diagram of intensity distribution. Interference case में intensity at all the bright points will be same level and of all the dark points of the same level, as well as the fringe width is always same irrespective of the position of central bright point. In second figure, we are checking the single slit diffraction. तो इसी स्लिट के डिफरेंट पार्ट्स में से जब वेव रिफ्रैक्ट होंगी या डिफ्रैक्ट होंगी तो आपको इस तरह का पैटर्न मिलता है which gives the intensity of central maximum as highest as well as the width of central maximum as double to that of the other widths. And in the third diagram, we have received double slit diffraction. So this experiment is, or the intensity is identical to the single slit diffraction. Now we may have actual differences. फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला दोनों में ही लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन डी और ए होगा, जिसमें स्मॉल डी इज द स्लिट सेपरेशन and over here small a is the slit width. Then phase difference, angular position, path difference. This table is given in your textbook. Next comes resolving power of a microscope. तो सबसे पहले microscope is an optical instrument which is used to resolve very small objects. जो small objects को आप naked eye से नहीं देख सकते, उनको देख सकते हैं हम with the help of microscope. तो सबसे पहले आप लेते हैं इसमें the wavelength of light emitted by the sources is lambda n. Then O and O dash are the two objects, point objects हैं, जो कि a distance से separate होते हैं. Check this, O and O dash are the two point objects which are separated by the small distance small a and they are placed in front of the objective. This AB is the objective of microscope. आपने दोनों ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्टिव के सामने रखा हुआ, ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने. And the medium between the object and the objective means ये वाला जो पार्ट है आपके पास, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू. And angular separation between the two objects means this is angular separation. This is given as 2 alpha. कि ऑब्जेक्टिव पर ये जितना एंगल बनाते हैं. Next, we are taking the diffraction pattern of two images, जिसमें आप Rayleigh's criteria लगाएंगे. Means the images are just resolved or well resolved or unresolved.
So these are two diffraction pattern of images of two objects. Now if we see the enlarged view of region around O and O dash, we get this type of plane wavefront figure where we have I and I dash are the centers of diffraction pattern. Check in this figure of Rayleigh's criteria, like ठीक, तो इस फिगर में से O and O dash are considered as the airy disk and airy rings. So we may have the microscope with a pair of non-luminous objects or microscope with a pair of luminous objects. जैसे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स लिट ऑन करना पड़ेगा, एंड इन जनरल दिस illumination will not be normal but oblique. So we may have n sin alpha in the case of microscope as numerical aperture, जिसको आप बोलेंगे Na. So the resolving power in the case of non-luminous objects will be equal to 1 upon limit of resolution, जो कि दो objects के बीच का minimum distance है, and this is equal to 2n sin alpha divided by lambda. So we observe that resolving power of microscope is inversely proportional to the wavelength. अब violet color के लिए wavelength least है, so resolving power will be maximum for violet color. And next topic comes as the resolving power of a telescope. तो सबसे पहली बात है, what are telescopes? They are the optical instruments which are used to see distant objects such as stars. Now what are stars? They are like luminous point objects, and they are situated at large distances from us. So their diffraction patterns will be airy disk. Hence, we may have the resolving power of a telescope as the reciprocal of the least angular separation between the objects that are just resolved. This is taken as 1 by theta. This is the figure कि प्लेन वेव फ्रंट आता है कॉन्वेक्स लेंस पर, और कॉन्वेक्स लेंस उसको फोकस करके बनाता है डिफ्रैक्शन पैटर्न के सेंटर्स, एंड देन आप लगाते हैं रेलेस क्राइटेरिया. सो वी मे हैव द angular resolution as 1.22 lambda upon capital D, where capital D is the diameter of ऑब्जेक्टिव, और एपर्चर भी बोल सकते हैं आप उसको. देन resolving power is D upon 1.22 lambda. Lambda should be the monochromatic wavelength. So in the telescopes we may have radio telescope in which GMRT, that is giant metro wave radio telescope, it is main point, and the giant metro radio telescope is situated at one of this type, is located at Narayangaon, which is near Pune, Maharashtra. So in the textbook, that diagram is also shown for GMRT radio telescope.
So practice well for this chapter as well as for the numericals. So in next session, we will be meeting for the revision of next chapter. Thank you guys. Enjoy learning.